Good evening students. Today we are here with another session of accountancy. आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट है और क्लास 11th का आप ये मान के चल सकते हो कि ये फाउंडेशन बनाने के लिए एक फंडामेंटल चैप्टर है जिसको हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत होती है. So without wasting time, let's start with the today's session, right? So first of all we need to understand that accounts is being classified in two categories. First method is called, this is called traditional approach and we can also call it British approach. And second one is called modern approach and we can also call it American approach or we can also call it accounting equation approach. So in accountancy, the classification of accounts can be done on these two bases, right? So let's understand this classification of accounts under traditional approach. So under traditional approach, accounts is actually classified into two categories. So first is personal account. First one is personal account, right? And second one is impersonal account. So let's define this personal account. If it is related with the name of any person, it is related with the name of any person, any person, firms or any institution. See, it is related with the name of any person, firms or any institution. So whatever about the impersonal account, it's real simple. It is not related with the name of any person, firms or any institution. So let's have some example of personal account, like any person, Ram's account. I can take an example of Ram's account. Any firm's account, like Reliance Industries Limited account. Reliance Industries Limited account. Any institution account like Delhi University account. So this is the classification under the personal account. Now impersonal account, if it is related with the name of any person, firms or any institution, so yes, we can say in impersonal account it is not related with the name of any person, firms or any institution. It can again be classified in two categories. They are real account and nominal account. Now what is real account? So real account basically is related with, it is related with assets. It is related with assets. And what is assets? I have already explained in basic accounting terms. But you can say anything which you own and has a realizable economic value in the future is called your assets. We can take some example like land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, goodwill, jewelry, motor vehicle, cash. There are so many names, but I have taken few example like land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, goodwill, jewelry, motor vehicle and cash. Nominal account. So actually it is related with expenses, losses. It is related with expenses, losses, incomes and gains. Incomes and gains. So let's have two classification. One related with the expenses
and second related with the incomes. So we can have few example of this expenses. Whenever we start, procurement of the raw material, so expenses incurred from there. So I can take an example, suppose purchases of raw material or maybe purchases of goods, right? Salaries paid to the staff, salaries paid. I can take few example. So rent paid, traveling expenses paid, traveling expenses paid. Similarly, I can take few example on income. So I can take sales, rent received would be a good income, interest received, discount received. So these are the example of your incomes. So initially under the traditional approach, accounts is being classified into two categories, personal account and impersonal account. Personal account, which is related with the name of any person, firms or institution. I have taken an example of that. Impersonal account is again subdivided into two parts, that is real account and nominal account. Real account, which is related with the assets, I have taken few name of the assets, and nominal account, it is related with the expenses, losses, incomes and gains. So I have taken certain few name of expenses and few names of income also. But personal account classification is left, so I am going to explain you the personal account classification as well. So now I am just talking about the personal account, since impersonal account classification has already been done. So personal account. Now personal account can again be classified into three parts. First one is the natural person. First one is the natural person. Second one is the artificial person. And third one is the representative personal. Representative personal. Now, natural person, we know that गॉड मेड जो होता है वो नेचुरल होता है, जो मैन मेड होता है वो आर्टिफिशियल होता है. हियर इज द लिटिल करेक्शन, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल कौन सा होता है, जो गॉड मेड होता है. जो मैन मेड होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है. लेकिन इन अकाउंटेंसी इट इज देयर इज अ लिटिल करेक्शन. जो लॉ मेड होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है. एंड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, नेचुरल समझ में आ गया, आर्टिफिशियल क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा. तो रिप्रेजेंटेटिव इज एक्चुअली अ न्यूट्रल अकाउंट विच सम टाइम कैन रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन एंड सम टाइम इट रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल पर्सन. लेट्स टेक सम एग्जांपल. जस्ट टेक एन एग्जांपल. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया नेचुरल पर्सन का, जैसे राम इज अ नेचुरल पर्सन, राम्स अकाउंट, ये हो गया नेचुरल पर्सन का एग्जांपल. आर्टिफिशियल का जैसे ले लेते हैं, तो यहां आई कैन टेक एन एग्जांपल लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट. ओके, सो नेचुरल पर्सन क्या हो गया, जो ह्यूमन बीइंग से, गॉड मेड जो क्रिएशन से रिलेटेड है वो नेचुरल पर्सन हो गया. जो मैन मेड या लॉ मेड आई कैन से वो आर्टिफिशियल हो गया. जैसे कंपनी है, कंपनी इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. सो ये आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल, जो भी कंपनीज है, इंस्टीट्यूशन है, दे कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हो गया, क्योंकि आपको पता होगा, कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करते हैं. ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, ये जो प्रीफिक्स लगा है इसका मतलब क्या होता है, रेंट वी नो दैट इट इज एन एक्सपेंस, बट आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट इट हैज नॉट येट बीन पेड. सो एक्सपेंसेस ड्यू बट इट हैज नॉट येट बीन पेड. रेंट हमने जो ओ करते हैं वो हमने अभी तक पेमेंट नहीं करा है. सो डेफिनेटली वी ओ टू समवन, मे बी किसी पर्सन को हम ओ करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ओ करते हो. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है जो रेंट पे आपको ऑफिस का स्पेस या रेजिडेंस का स्पेस आपको ऑफर करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हम ओ करते हैं. इन बोथ द कंडीशन इट रिप्रेजेंट द ईदर द नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे राम की कोई बिल्डिंग है और उसमें हम टेनेंट के तौर पे रहते हैं, सो वी ओ टू राम, तो उस कंडीशन में आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन. एंड सपोज हमने डीएलएफ का कुछ ऑफिस स्पेस ले रखा है और हमने उसको रेंट ड्यू है बट इट हैज नॉट येट बीन पेड, सो उस कंडीशन में दिस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल
पर्सन। सो नेचुरल समझ में आ गया, आर्टिफिशियल समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इज अ न्यूट्रल अकाउंट विच सम टाइम कैन रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। आई कैन टेक वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। जैसे प्रीपेड मोबाइल फोन, प्रीपेड मोबाइल एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है, as we know, pre का मतलब advance, pre का मतलब before, so paid in advance. In these days, there are two types of services offered by the like Airtel or Jio or Vodafone. ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, दे कैन ऑफर द सर्विसेज इन अ पोस्टपेड मैनर और द प्रीपेड मैनर। सो प्रीपेड मैनर में क्या होता है कि हम यूज करने से पहले वी हैव पेड इन एडवांस। So prepaid mobile phone bill expense. So definitely it is an expense, but when you advance, so someone is responsible for the same. किसको आपने advance करा है? Just take an example. Suppose if I am using Airtel connection, तो मैंने जो prepaid का अपना recharge करा है, इसका मतलब ये है कि ये represent करेगा Airtel को। ये किसको represent करेगा? Airtel को represent करेगा। And yes, Airtel इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगी? आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां भी आपने देखा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल की तरह क्लासिफिकेशन नहीं है, ये न्यूट्रल अकाउंट है। समटाइम इट रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन एंड समटाइम इट रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल पर्सन। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। Now classification of accounts under modern approach. First of all, modern approach can also be called American approach or accounting equation approach. Under the modern approach, it is classified in 5 categories. ठीक है, it is classified in 5 categories. So first is owner's capital. First is owner's capital. Second is revenue. Third is liabilities. Fourth one is expenses. And fifth one is your assets. ठीक है, सो ओनर्स कैपिटल की जब मैं बात करता हूं, सो द एग्जांपल इज कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब इनकम। सो यहां आप कुछ रेवेन्यू का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, एंड सेल्स हो गया। लाइबिलिटीज की बात करें, एनीथिंग विच यू ओ एंड हैज टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड योर लाइबिलिटीज। वी कैन टेक सम एग्जांपल लाइक क्रेडिटर्स, हमारे लिए जो सप्लायर होता है, द पर्सन हु सप्लाई गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट इज अ लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये भी हमारे लिए लाइबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, तो ये भी हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं। कोई प्रोविजंस हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो भी हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं। सो दिस आर द गुड एग्जांपल ऑफ योर लाइबिलिटीज। एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टार्ट विद द परचेजेस। उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ को आप सैलरी पे करते हो, ये भी आपका एक्सपेंस है। आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो, एक्चुअली ये आपके लिए लॉस है, लेकिन दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एक्सपेंसेस ओनली। ठीक है, सपोज हमने लोन लिया हुआ है एंड वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द सेम, सो इंटरेस्ट जब पे करते हो, दिस इज ऑल्सो इन योर एक्सपेंस। एसेट्स के बारे में तो अभी हमने बहुत डिस्कस करी है, जैसे कैश हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री स्टॉक हो गया, गुडविल हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द गुड एग्जांपल इन दिस। तो देखो, ये ऑलरेडी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी करा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो एसेट्स है, ये हमने रियल अकाउंट में समझा था। जो एसेट्स है, मैंने बताया था कि रियल अकाउंट में इट इज रिलेटेड विद द एसेट्स। तो ये जो एसेट्स का सेगमेंट है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन रियल अकाउंट। ये जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द नॉमिनल अकाउंट।
और ये जो ओनर्स कैपिटल है ये पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड यस, जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का आप कंपेयर करोगे तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक कॉलम नहीं होता फॉर द लायबिलिटीज, कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं होता, तो अल्टीमेटली हमें पर्सनल अकाउंट में इसको रखना पड़ता है। यहां एक स्पेसिफिक कॉलम बना हुआ है लायबिलिटीज का, तो आई प्रेफर एंड यू शुड आल्सो प्रेफर दिस मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर द टू मेथड्स जिसमें आपके आगे के अकाउंट्स बेस्ड होंगे। लेकिन दिस इज द वेरी गुड मेथड, आपको ये वाला मेथड आना दोनों चाहिए, लेकिन आपको ये फॉलो करना चाहिए। दिस इज माई सजेशन टू यू। अब नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हैं। सो लुकस फ्रा पेसेलियो, ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल द अदर नेम इज लुकस पेसेलियो, is the father of accounting. He discovered the concept of double entry system of bookkeeping. As per this system, each business transaction affects two sides of an account, two sides of an account. Now interesting fact coming out, debit and credit, right? So while debit indicates, this is very interesting, debit indicates destination and credit implies that source of monetary benefits. डेबिट क्या करता है, डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। हम ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में बात करते जाएंगे। और जो क्रेडिट होता है, इट इंप्लाइज द सोर्सेज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब इस तरह से भी आप समझ सकते हो, और डेफिनेटली हम इसको आगे जब भी जर्नल करेंगे तो इसमें मैं आपको और ब्रीफ में समझाता हुआ जाऊंगा। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी हमने ट्रेडिशनल करा है, तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच एक्चुअली द क्लासिफिकेशन इज अंडर द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का क्या होगा रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऊपर वाला देखना है, द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट, ये मैंने इसलिए कॉमन रखा है सबके लिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इसका रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट का। एज पर द मॉडर्न अप्रोच, accounts is classified into 5 categories as I explained you: owner's capital, revenue, liabilities, expenses and assets. So owner's capital, revenue, liabilities increase होगा तो it's supposed to be credit, और जब decrease होगा तो क्या होगा, debit. This is the sign of increase and this is the sign of decrease. Expenses and assets जब increase होगा तो ये debit होगा, और जब decrease होगा it's supposed to be credit. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं ये हम एक बार देखते हैं, उसको जस्टिफाई भी फिर करेंगे। देखिए, दिस इज द गुरु मंत्र, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीजेस, दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीजेस। इंडिया में जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम ओआरएस का घोल देते हैं, यहां हम ओआरएल का घोल देंगे। ऑलराइट, अकाउंट्स पर के हम सीए बनते हैं, यहां हम ईए बनेंगे। ऑलराइट, सीडी प्लेयर होता है हमारे घरों में, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए, वेयर सी स्टैंड फॉर क्रेडिट, D stand for debit, D stand for debit and C stand for credit. And here O stand for owner's capital, R for revenue, here O stand for owner's capital, R for revenue, R for revenue, L for liabilities, L for liabilities, E for expenses, A for assets. तो जब भी ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड, जब डिक्रीज होगा तो इट्स सपोज टू बी डेबिटेड। एक्सपेंस एंड एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिटेड, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिटेड। मैंने कुछ भी नहीं करा है, इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए ORL, ठीक है, ORL। इंक्रीज करने के लिए देखिए तीनों में क्रेडिट हो रहा है, और डिक्रीज होने के लिए देख लीजिए तीनों में डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस एंड एसेट्स, तो EA फर्स्ट लेटर हो गया, इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डिक्रीज करने के लिए क्या हो गया, क्रेडिट कर लिया। तो हो गया ना, ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड एसेट जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो ये बहुत सिंपल है, हम कॉन्सेप्ट को हमने फोकस करा और छोटी सी राइमिंग कर दी और आपके लिए ये बहुत ईजी हो गया। तो इंडिया में जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं हम, ओआरएस की जगह ओआरएल का घोल देते हैं। अकाउंट्स पर के क्या बनते हैं, सीए की जगह ईए बनते हैं। सीडी प्लेयर होता है, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए, बस इसी से आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, वो आज से स्टार्ट हो गया है। इसी के ऊपर
ये जो गुरु मंत्र है इसको ध्यान से रखना है। सारा ट्रांजैक्शन इसी से, सारे जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी लेजर हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब भी हमारे को समझ में नहीं आएगा, वी कैन फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, और वो बहुत इजीली आपका होता चलता मतलब समझ में आ जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लव दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।